Hello students, I am Mahima Patidar and today I will be teaching introduction of laser and Einstein's relationship between coefficient A and B. So, uh, what is a laser? So, laser is a device that emits light that we all know that we all use and in day-to-day basis also. डेली सब लोग इवन टीचिंग में भी हम लेजर पॉइंटर यूज करते हैं जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम वर्चुअल लेजर पॉइंटर यूज करें तो ये रहा हमारा लेजर पॉइंटर है ना सो एवरीवन नोज अबाउट इट सो दिस वेयर इज दिस लेजर टर्म केम फ्रॉम so this laser term came from light amplification by stimulated emission of radiation. So what is this light amplification? What is this stimulated emission of radiation? है ना? So we all know that this is radiation. This light is coming. This all the forms of electromagnetic wave spectrum is has some like light is dual nature, so it has wave nature and particle nature, and that particle nature is basically radiation. So we all know about this. Okay, so this first laser that we are talking about is this first laser was built by and it was in 1960, and it was the first ruby that they constructed was the ruby laser. Okay, so and wavelength is a like we calculate wavelength of a laser light in vacuum based in vacuum ki whatever the wavelength is, that's the wavelength of that laser light. So most single wavelength lasers are actually produced in radiation in several modes having slightly differing frequencies, and often not in single polarization. So laser produces a light beam in which all the waves are of same frequency, same phase, and all the waves travel in definite direction. ठीक है. So इसको पढ़ने के लिए सबसे पहले हमको लाइट के बारे में जानना पड़ेगा कि what is absorption, what is emission. इसके बाद हम आगे इसमें stimulated emission के concept को समझेंगे. So what is absorption? So basically what happens कि सबने हमने बोहर एटॉमिक मॉडल पढ़ा है, हमें पता है कि लाइट जो इलेक्ट्रॉन्स है वो डिस्क्रीट एनर्जी स्टेट्स में रहते हैं. उसी प्रकार से ना वही बेसिकली वही डिस्क्रीट एनर्जी स्टेट्स एक एक पर्टिकुलर एनर्जी की होती है. तो जब भी मैं किसी ऑब्जेक्ट पे लाइट डालूंगी या एनर्जी सप्लाई करूंगी, सो व्हाट विल हैपन दैट इट विल गो टू दैट द एटम्स of that particular level of that level will excite to some energy higher energy states. ठीक है. सो व्हाट हैपेंस विद एब्जॉर्प्शन इज कि आपने लाइट डाली किसी सरफेस पे, ठीक है, और वो फिर तब वो स्लोएस्ट एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट्स की तरफ एक्साइट हुआ. जैसे यहाँ हमने एनर्जी सप्लाई करी, फोटोन आया, फोटोन ने एनर्जी एब्जॉर्ब करी और वो हायर एनर्जी स्टेट पे चला गया. इसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट. ठीक है. अभी एमिशन क्या होता है? होता है स्पॉन्टेनियस एब्जॉर्प्शन और ये है स्पॉन्टेनियस एमिशन. अभी जो भी एटम ऊपर की तरफ गया है, हायर एनर्जी एक्साइटेड स्टेट पे गया है, वो इट विल बी इन सब एक्साइटेड एनर्जी स्टेट जो कि मोस्टली अनस्टेबल रहती है. सो इट विल कम डाउन टू इट्स ग्राउंड स्टेट. ठीक है. और इस स्टेट पर जो एटम रहता है हमारा वो और अराउंड 10⁻⁻8 सेकेंड तक रहता है, विच इज़ लाइक वेरी स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम. इस केस में लेजर एक्शन के लिए हमें एक ज़रूरी टर्म होती है पॉपुलेशन इन्वर्जन. वो पॉपुलेशन इन्वर्जन 10⁻⁻8 सेकेंड में पॉसिबल नहीं होती है. ठीक है. तो अब यहाँ पर क्या होता है, हमें एक लेजर एक्शन कैसे मिलेगा? ये जो स्पॉन्टेनियस एमिशन है, स्पॉन्टेनियस एब्जॉर्प्शन है, ये दो जो फिनोमेना है ये नेचुरल फिनोमेना है. दैट बेसिकली हैपेंस एवरीवेयर एंड दैट इज नेचुरली हैपनिंग एवरीवेयर. ठीक है. सो व्हाट इज दिस स्टिमुलेटेड एमिशन का कंसेप्ट कहाँ से आता है, जो कि हम आगे देखेंगे. ठीक है. सो व्हेन यू supply energy to a photon to the ground state, it will get excited to higher energy state. Okay. And then after some time, like after 10⁻⁻8 second of time, it will again come back to its ground state by releasing that photon जो कि उसने absorb करा है. ठीक है. बट एक नेचुरली फिनोमेना एग्जिस्ट करता है जिसको स्टिमुलेटेड एमिशन कहते हैं. जैसे कि if a atom is already excited to some higher energy state, वो ऑलरेडी एक हायर एनर्जी स्टेट पे एक्साइटेड है और मैंने तब एक पर्टिकुलर एनर्जी का फोटोन उसके ऊपर डाला, तो इंस्टेड ऑफ एक्साइटिंग टू हायर एनर्जी लेवल और what will happen in this case is it will come back down to some metastable state where it will stay for 10⁻⁻³ seconds. ठीक है. From this the concept of this population inversion
वो हमें मिलता है, जिसके कारण से हमें एक लीजिंग एक्शन मिलता है। तो हम आगे देखेंगे कि पॉपुलेशन इन्वर्जन क्या होता है और वो पंपिंग किस प्रकार से होती है, ताकि हमें पूरी की पूरी पॉपुलेशन ग्राउंड स्टेट की हायर एनर्जी स्टेट में मिल सके। पर जो बेसिकली हमारा प्रिंसिपल है जिस पे लेजर एक्शन बेस्ड है, वो है स्टिमुलेटेड एमिशन का, कि हम किस प्रकार से एक एटम को अम, एक एक्साइटेड एटम को एक पर्टिकुलर एनर्जी प्रोवाइड करके और उसको एक मेटास्टेबल स्टेट पे लाके हमें किस प्रकार से लेजिंग एक्शन मिल सकता है। सो इसके लिए अब यहाँ पे तीन चीजें होती है जिसको पढ़ना पड़ेगा। आइंस्टाइन के तीन कोइफिशिएंट है। आइंस्टाइन का जो पहला कोइफिशिएंट है जिसको बोलते हैं लाइक आइंस्टाइन कोइफिशिएंट बी, जो कि हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि इस केस में देख सकते हैं एब्जॉर्प्शन के केस में, कि एटम ने एब्जॉर्ब करी एनर्जी। तो जब एटम ने एब्जॉर्ब करी एनर्जी, तब उसके अंदर एक तब द एटम इज गोइंग फ्रॉम एनर्जी वन स्टेट वन टू एनर्जी हायर एनर्जी स्टेट टू। Okay, and in this case what is happening is that it is naturally coming down. Okay, so in here the coefficient A will take place, the Einstein coefficient of spontaneous emission. Okay, from that will be said is A to 1. And in this stimulated emission case, what is happening, that two phenomena are happening, that direct emission is happening and the stimulated emission is happening. Which means that spontaneous emission is also happening and stimulated emission is also happening. So that we'll see that how we write it. Okay. So Einstein showed that the interaction of radiation with matter with the help of three processes called stimulated absorption, spontaneous emission and stimulated emission. And उन्होंने 1917 में इसको प्रॉपर मैटर का डिस्क्रिप्शन और प्रॉपर इस चीज़ को मतलब प्रॉपर मैटर का डिस्क्रिप्शन दिया था इसके बारे में, कि एब्जॉर्प्शन क्या होता है, एमिशन क्या होता है, स्टिमुलेटेड एमिशन क्या होता है। इस प्रकार से उन्होंने एक थियरी दी थी जिसको उन्होंने ए और बी कोएफिशिएंट के फॉर्म में निकाला था, और वो आज हम देखेंगे। तो लेट द नंबर ऑफ एटम्स इन ग्राउंड स्टेट बी n1 एंड एक्साइटेड स्टेट में मान लो मैं एटम n2 मान लेती हूँ। ठीक है, तो अभी यहाँ पर क्या होगा कि एनर्जी, अगर आर रेट एब्जॉर्प्शन का, अगर मैं R1 रेट लेती हूँ एब्जॉर्प्शन का, अगर मैं R1 रेट लूँ एब्जॉर्प्शन का, तो एनर्जी जो रहेगी मेरी वो E1 की ज़्यादा रहेगी, और इसको बोलेंगे यहाँ पर मेरा एब्जॉर्प्शन रेट ज़्यादा है, स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन हो रहा है, मतलब ग्राउंड स्टेट पे पार्टिकल्स ज़्यादा है और वो हायर एनर्जी स्टेट पे एक्साइट हो रहा है। ठीक है, सो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन द ग्राउंड स्टेट। दैट इज द रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन द ग्राउंड स्टेट। ठीक है, which will be directly proportional to the energy supplied to it. This E is the energy that I am supplying. So which will be equal to some constant B, where B is the Einstein's coefficient of stimulated absorption. Okay, which represents the probability of absorption of radiation. So and which is represented in the form of energy density in here, and energy density function के रूप में represent करते हैं हम। तो energy density is defined as the incident energy on an atom as एनर्जी इंसिडेंट एनर्जी जो जो मैंने सप्लाई करी है। तो अब क्या हो रहा है, हम्म, अब क्या हो रहा है, हम R3 की बात करते हैं, दैट इज स्टिमुलेटेड एमिशन के केस में। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो एटम है वो E2 स्टेट से E1 ग्राउंड स्टेट पे जा रहा है, यहाँ पर E2 स्टेट से E1 स्टेट पे जा रहा है, और यहीं पे हमको लेजर एक्शन मिल रहा है। अभी देखेंगे हम कैसे मिल रहा है। ठीक है, so R3, let R3 be the rate of stimulated emission, where E2 is where the energy the higher of the excited state is greater than the ground state energy. ठीक है, which is directly proportional to the energy density which is supplied. Energy density is basically कि जितनी हम energy per unit volume में supply कर रहे हैं। ठीक है, and which will be proportional to the number of atoms present in the excited state of, like अगर सेकेंड हायर एनर्जी स्टेट से मुझे एमिशन मिल रहा है, तो मैं एज्यूम कर रही हूँ कि हायर एनर्जी स्टेट पे ज़्यादा एटम्स प्रेजेंट होंगे। तो अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शन विच इज डायरेक्टली रिलेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का है, तो जब मैं उसको इक्वेट करूंगी, सो आई विल पुट सम कांस्टेंट हियर विच इज कॉल्ड आइंस्टाइन कोएफिशिएंट ऑफ स्टिमुलेटेड एमिशन। This B21 coefficient is very important. Here it represents the Einstein coefficient of stimulated emission. ठीक है,
तो अभी क्या हो रहा है कि दोनों चीज़ एक साथ होती है। जब जब हमारा स्टिमुलेटेड एमिशन होता है तो स्पॉन्टेनियस एमिशन भी साथ-साथ में काम कर रहा होता है। ठीक है? तो अब यहाँ पर प्रोबेबिलिटी अगर मैं मान लूँ कि चलो 70 60 से 70 या 80% स्टिमुलेटेड एमिशन हो रहा है, तो सम परसेंट स्पॉन्टेनियस एमिशन भी हो रहा है। तो इसीलिए यहाँ पे हमें रेट जो लूँगी टोटल रेट एटम के एक्साइट होके वापस आने का, दैट विल बी इक्वल टू सम R2 प्लस R3। ओके, सो बाय पुटिंग दिस इक्वेशंस, जो कि वन फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को मैं पुट करूँ, तो जो मैं सॉल्व करने के बाद मुझे एक एनर्जी डेंसिटी जो कि मैंने सप्लाई करी है उसका इस प्रकार का एक रिलेशन मिलेगा, दैट इज N2A21 बाई N1B12 minus N2B21. ठीक है, so by dividing and subtracting we will get a relation like this, which is equal to E equal to A, Einstein's coefficient of spontaneous emission divided by Einstein's coefficient of stimulated emission, multiplied by 1 by N1 population of the ground state divided by the population of excited energy state, multiplied by B12 divided by B21 minus 1. Here, if we assume that the probability of spontaneous emission and stimulated emission is equal, then the rate of the particles going to the higher excited state and coming down to the ground state is equal. That means if we assume that B12 is equal to B21, then we will get this particular sort of relation, which is equal to E equal to A21 by B21 multiplied by 1 by N1 by N2 minus 1. And uh, if we use Boltzmann distribution law, then we will get this particular relation of population existing in that particular state. Okay, so finally, by using Planck radiation law and Boltzmann distribution law, we will come to this particular state. By you can use this equation आप fifth or sixth को use करके relate करके you will come to this conclusion that you will get this sort of relation A21 by B21 will be equal to 8 pi h nu cube by c cube. This is the relation between Einstein's coefficient in laser light. So this is we have completed Einstein's coefficient of uh, A and B relation between Einstein's coefficient.